Hello and welcome, my dear students. Today we will do the complete analysis of your three different types of sentences: simple, compound, and complex. As well as we will understand how to transform in between them, means how we can do interchange. Suppose there are two sentences given, simple sentences, how we will combine these two into simple, compound, and complex. All these things today we will understand in this class. Okay, students, before going to this discussion, let me tell you what is the definition of simple, complex, and compound sentences. Can you tell me, students, what is a simple sentence? Anyone? Tell me what is a simple sentence? Definition of simple sentence. Sir, the sentence which have one independent clause. The sentence that is having one independent clause. Very good. You have learned from my last class, I think. Yes. Students, we have already studied that in simple sentence, there we will find one independent clause. And clause and phrase, it is clear to all of you? Yes, sir. What is a clause? Tell me. Sir, a group of words that give a complete sense. A group of words that gives a complete sense, it is called a clause. Okay. Suppose I will write here blue sky. What is it? Sir, phrase. It's a phrase. Okay. Tell me the example of one clause. Sir, he is going to school. He is going to school. He is going to school. Good. It's a clause. Students, a clause means it must have the combination of subject and verb. Wherever there is a clause, the combination is must. Without the combination, that cannot be termed as a clause. जोटी भी तुम क्लॉज देख से सब्जेक्ट थी वर्ब ही रही देख क्लॉज मान को आम दीटा टाइप रे कैटेगराइज करछे कोन कैटेगराइज करछे सर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट आउ इंडिपेंडेंट गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रे एग्जांपल को ही इज गोइंग टू स्कूल इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इट्स इंडिपेंडेंट ओके गोटे एग्जांपल को डिपेंडेंट क्लॉज रो Sir, while I was sitting. While I was sitting. Okay, good. Second, first hela gote clause, second type gote clause. What is sentence? Can you tell me what is a sentence? Who can tell me what is a sentence? Anyone? Nobody. A sentence means, students, we have two different types of clauses. One is your independent and the other one is dependent. Yes. All these independent clauses are called sentence. Got it? Yes, sir. That means all the clauses are sentences or some clauses are sentences. Sir, independent clauses. Some independent clauses are called sentences. Very good. That means clause is clear, dependent and independent clauses is also clear. Yes, sir. Okay. Now, how to make one independent clause dependent? Can you do this? Yes, sir. How to do this? Sir, By using subordinating conjunctions. Very good. While is it subordinating conjunction? जदि हमें ओडिया रे कहबा मु जाउथिली, I was going. मु जदि गोटे कंजक्शन लगेबी तागर कोन लगेबी जेते बेले मु जाउथिल ताले कोन हे गेला एटा जेते बेले मु जाउथिल कहले कोन हे जिवो सेंस आछि कि सेंस आसिला जेते बेले मु जाउथिली नो ताले याको हमें कहबा कोन कहबा डिपेंडेंट क्लॉज ओके स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू Sir, clause and phrase difference. okay very good the difference between clause and phrase suppose I will write here good morning, wooden chair, Can you find
any subject verb combination in this group of words? No, sir. No, there is no subject verb combination. When a group of words, they don't have the subject verb combination and they give some partial sense, they are called phrase. Got it? And when there is the combination of verb inside the group of words, they are called your clauses. Difference, the concept is clear? Yes, Phrase sir. and clause. Yes, sir. Phrase रे हमरो subject verb combination रहिबनी किंतु हमरो clause रे कोन रहइबो subject और verb रे combination रहइबो. Okay. Yes, sir. एबे देखिबा compound sentences. He was dancing and he was singing. Here you see I have written two different clauses. This is one independent or dependent clause. He was dancing. Independent. This one, Dependent. use one comma here before the conjunction. We need to use one comma. Okay. And to form this compound sentences, we need what type of conjunctions? Coordinating conjunction. They are the fan boys. What you have been using? They are the fan boys coordinating conjunctions. Okay. In this compound sentences, even if I remove this conjunction, both of these sentences will still give complete sense. Such type of sentences are called compound sentences. Okay. Students, we can understand these three in another way also. Suppose you take your independent clause 1, dependent clause 0.5. Think your independent clause as 1 and dependent clause as 0.5, independent as 1. Independent means 1. Right here, independent 1 for independent, 0.5 for dependent. Okay? 1 means, tell me, it is 1 means? Simple sentence. Very good. 1 means simple. 1.5 means Complex. complex. Very good. 2 means Compound. very good. Now is it clear? The combinations? Yes, sir. Very good. 1, 1.5 and 2. This is not a standard English rule, but to make you understand, I did this. Okay, don't use this in English. आजिर क्लास रे हमें सिखिबा सिंथेसिस. तमे कोन कहितिला पिला माने सिंथेसिस कहितिला ना सिखिया पई? Yes, sir. Okay, synthesis रा माने anyone can tell me the meaning of synthesis? हाँ देखो synthesis माने combine माने join. synthesis माने कोन combine करिबा बा join करिबा. कहा को join करिबा? दुईटी सेंटेंस को आमे join करिबा. तले आजिर क्लास रे हमें पढिबा synthesis by using participles. हमर पार्टिसिपल स्टूडेंट्स जानिथिलो तमे वर्ब रो पार्टिसिपल फॉर्म कोन जानिथिलो? गोटे हला हमर फाइनाइट वर्ब आ थरे रिवीजन कर दबा. गोटे हला फाइनाइट आ कोन थिला नॉन फाइनाइट माने अछि गोटे थिला फाइनाइट वर्ब आ गोटे थिला कोन नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब रे हम जानि जे फाइनाइट वर्ब कोन पढिथिले लास्ट क्लास रे. Yes, sir. नॉन फाइनाइट रे की किछ अछंदी जेरन आ किस कहलो जेरन्स आ कि अछंदी पार्टिसिपल्स अछंदी ना. Yes, sir. आ कि अछंदी Infinitives. इन्फिनिटिव्स. वेरी गुड इन्फिनिटिव्स. आज हम सिखिबा पार्टिसिपल को नेकी केमती कोन करबा दुईटी सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करबा गोटे सेंटेंस रे कन्वर्ट करबा. तले यार किछ कंडीशन अछि ना सब सेंटेंस को हम कंबाइन कर परबा? किछ रूल्स रहै छी. कोन रहै छी? दुईटी सेंटेंस रो सब्जेक्ट समान रहबा दरकार. दुईटी सेंटेंस हम जोड़िबा तार सब्जेक्ट समान रहबा दरकार. जेमति कि से कांदिला से घर को गला. दुईटी जगह सब्जेक्ट रे दुईटी के सेंटेंस रे सब्जेक्ट किसे? से ही. गुड. एई बोली दुईटी सेंटेंस रो सब्जेक्ट सिमिलर रहिले सेम रहिले हम तक कोन करबा
सिंथेसिस करिबा ताले चलो स्टार्ट करिबा एवं आउ दी केतोटी रूल मु तुमको कहूची बिफोर गोइंग टू कंबाइन दिस सेंटेंसेस लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द रूल्स आमे आज कहा ऊपर सिंथेसिस करिबा कहा को व्यवहार करिबा पार्टिसिपल ओके पार्टिसिपल आम पाखरे कोन अछि गोटे अछि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे अछि परफेक्ट पार्टिसिपल ए दुटी आमे सिखिबा गोटे अछि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे हला परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कोन वर्ब रे आमे डायरेक्ट आईएनजी लगाइबा दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट पार्टिसिपल मने करो सी अछि ताले कोन होबो सिंग बुझि परछो मने करो कैरी अछि कोन होबो कैरिंग बुझि परछो वर्ब प्लस आईएनजी दैट इज पार्टिसिपल एठी कोन अछि परफेक्ट पार्टिसिपल रे आमे लगेबा हैविंग तापरे वर्ब रो थर्ड फॉर्म V3 बुझि पालो पिला माने पार्टिसिपल रे वर्ब रे केवल आईएनजी जोड़ी दियो आउ परफेक्ट पार्टिसिपल रे हैविंग प्लस V3 कर दियो रूल क्लियर हो गेला स्ट्रक्चर क्लियर तापरे देखिबा कोठी पार्टिसिपल व्यवहार करबा कोठी हैविंग पास्ट को व्यवहार करबा मु गोटे सेंटेंस लिखुची सपोज he saw the fire गोटे सेंटेंस he ran away आउ गोटे सेंटेंस देखा पिला माने ये दुईटी सेंटेंस आमे कोन करबा कंबाइन करबा ये गोटे सिंपल सेंटेंस ये गोटे सिंपल सेंटेंस ए दुईटी सिंपल सेंटेंस को आमे कोन करबा कंबाइन करबा आउ दुईटी कॉम्बिनेशन बहि लिखुची आउ दुईटी कॉम्बिनेशन लिखुची एटा ग्रुप ए कॉम्बिनेशन ग्रुप बी रे मु आउ दुईटी कॉम्बिनेशन लिखुची कोन लिखबी he passed the board exam he passed the board exam full stop he got his certificate पिला माने मु दुटी ग्रुप लिखिली एठी ग्रुप ए आ गोटे ग्रुप बी ग्रुप ए रे he saw the fire he ran away आमे देखिबा सब्जेक्ट तो समान अछि एवं सब्जेक्ट को देखि साला परे आउ गोटे जिंस हमहु देखिया पड़िबो कोन दुईटी एक्शन भितरे किछि टाइम गैप रहिछि ना रहि जदि दुईटी एक्शन भितरे किछि टाइम गैप नाही ताहले आमे कोन लगेबा आमे लगेबा प्रेजेंट पार्टिसिपल जदि दुईटी एक्शन भितरे किछि टाइम गैप रहिछि ताहले आमे लगेबा कोन परफेक्ट पार्टिसिपल बुझि पारलो ताहले he ran away सॉरी he saw the fire he ran away तमे एई टाइम गैप अछि ना नाही एटा तुमको टीचर बोर्ड रे कहबे तम एग्जाम टाइम रे you have to determine whether there is a time gap in between these two actions or not you have to determine this nobody will help you तो तमे डी जज करबो जदी गुडे लोक फायर देखिला ताले इमीडिएटली से दौड़ गिरी पळेला ताले एठी हमर कोन करबा टाइम गैप को दबानी ताले कोन लिखबा एठी जदी कन्वर्ट करबा कोन लिखबा वर्ब के से तमे कहबो सर को वर्ब को रनिंग लिखबा ना सिंग लिखबा Sing. काहे के सिंग करबा जो एक्शन ता आगो होईची जो एक्शन ता आगो होईची सेही वर्ब टी को हमें कोन करबा पार्टिसिपल रे कन्वर्ट कर दबा बुझबालो Yes, तमे कहबो सर तो दीटा वर्ब अछि आमे जोटा को भी इंटरचेंज करि परिबा ना सेमती करि हबनी कोटी के पार्टिसिपल करबा आमे सर जोटा आगे से देखिला जो जो एक्शन टी आगो होईची क्लियर ताहले आमे स रो मेन बेस वर्ब कोन सी सी को हमें कोन करबा See. पार्टिसिपल करबा ताले पार्टिसिपल करले कोन हबो सिंग सिंग पाखरे कोन लगेबा सिंग द फायर सिंग द फायर तापर कोन ही ran away कमा दे दियो सिंग द फायर He ran कमा दे दियो तापर ही Ran ran away इज इट क्लियर सिंपल सेंटेंस क्लियर yes sir प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर अच्छा yes sir एबे देखिबा he passed the examination board examination he got his certificate ताले दुईटी जाको से बोर्ड परीक्षा रे पास कला तापरे सर्टिफिकेट पाइला दुईटी जाको पूरा टाइम गैप नाही इधर ना अछि सर अच्छी अछि
कहीं बोर्ड परीक्षा देला बोर्ड परीक्षा पास कला तापर किसी दिन मासे मंथ की 2 मंथ्स वेट करिया पर जाई कि से कोन होला सर्टिफिकेट पाइला तले एठी हम कोन लिखिबा सर परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कोन लिखिबा हैविंग पास्ट passed द बोर्ड एग्जाम the board exam comma he got his his certificate. certificate clear पिला माने क्लियर हैला तो यस चलो बहिरु किछि क्वेश्चंस दियो आमे दाउ गोटे गोटे सॉल्व करिबा एनीवन यू रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक एंड वी विल सॉल्व वन बाय वन सब्जेक्ट एका दिबा भली सेंटेंस को पढिबो रीड एनीवन Sir, the question is, यस she heard the good news. She heard the good news. Full stop. She heard the good news. Full stop. She smiled. Number 2. She smiled. She smiled. देखो फर्स्ट पिला माने एई दुईटी सेंटेंस रे से गोटे भलो खबर सुनिला एवं से हसिला दुईटी एक्शन भितर टाइम गैप रहुची ना रहुनी Rahuni. टाइम गैप नाही देयर इज नो टाइम गैप ताले मेन वर्ब की सेठी Heard. हर्ड को हमें कौन करिबा Hearing. पार्टिसिपल करिबा Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप को हर्ड र बेस वर्ब के से Hearing. हर्ड र बेस वर्ब के से Hear. हियर को हमें कौन करिबा पार्टिसिपल करिबा हियर को हमें पार्टिसिपल कले कौन हे जिवो Hearing. वेरी गुड हियरिंग करि परिबा नहले तमे ऑन हियरिंग मध्ये करि परिबा बुझि पालो पिला माने Yes, sir. हियरिंग करि परिबा नहले हमें ऑन हियरिंग मध्ये करि परिबा ऑन हियरिंग डैश The good news. वेरी गुड द गुड न्यूज तापर कोन लगेबा कमा लगेबा कमा लगेला पर कोन लगेबा She smiled. सी स्माइल सरला पिला माने Yes. इजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आमे एटा कोन करछे को सेंटेंस से कन्वर्ट करछे दिटा को आमे को सेंटेंस करछे Simple. सिंपल सेंटेंस करछे याको हमें कॉम्प्लेक्स कर परबा ना कर परबानी Yes, sir. अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काहू कहबा हमें कॉम्प्लेक्स काहू कहबा गोटे सिंपल सेंटेंस रे हमें कहले जो सेंटेंस रे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहबा हमें दाउ कहबा सिंपल सेंटेंस sentence. देन व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज वेरी गुड द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट ओके ओ फर्स्ट हमें एटा को बुझिबा तापर हमें एबे नेक्स्ट एबेटा या परे हमें बुझिबा कॉम्प्लेक्स आउ कंपाउंड ओके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहले हम बुझिबा कोन देखा बिला माने गोटे डिपेंडेंट आ गोटे इंडिपेंडेंट रा कलेक्शन एई दुईटी डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जेमति कि while I was going on the road comma I saw my teacher पिला माने एटा गोटे को प्रकार कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड व्हिच दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू कहीं की while I was going on the road this one is dependent and I saw my teacher is इंडिपेंडेंट very good remember these complex sentences are always joined by some conjunctions these conjunctions are called सबऑर्डिनेटिंग subordinating good these conjunctions are called subordinating conjunctions good read the second question So the boy was tired. the boy was tired the boy was tired Sir, he went to bed. then he went to bed good এই দুইটি সেন্টেন্স ভিতরে টাইম গ্যাপ রহিছি না রহিনি No, sir. নো কাইকি না সে যেতেবেলে বেড কু যাইছি সেতেবেলে কোন আছে টায়ার্ড আছে টায়ার্ড হেইছি এবং বেড কু যাইছি তাহলে ফার্স্ট ভার্ব কিসে Tired. was this is your voice verb sorry this is your verb was is a what kind of verb it determines
The boy was tired means it determines any action or state. State. Yes, this was determines the state of the boy. What it determines? State of the State of the boy means the boy was tired. To represent these states, we use dash in English, wasing or what? Tell me, Yes. is it? No, sir. No. Then what should be the correct form? Been. Yes, very good. Being what? Being tired, he went to the bed. He went to bed. Yes. Is it correct? No, sir. It should be the boy went to bed. Yes. Why? Why the boy? Because while or when pronoun and noun both comes to choose, we Prefer the pronoun. We prefer the noun, not the pronoun. According to this rule, here we should write being tired, not he. The boy went to bed. ओके एई दुटी सेंटेंस को चला पिला माने हमें करिबा कोन करिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिबा कोन करिबा की कहि परिबो कोन करिबा फर्स्ट सेंटेंस को हमें कोन कर दबा सबऑर्डिनेटिंग करिबा सब इंडिपेंडेंट को सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज करिबा केमति करिबा द बॉय वाज टायर्ड ही वेंट टू बेड देखो एठी हमें लगेबा as the boy was कौन थिला बॉय टायर्ड ही वेंट टू बेड आज काहे लगैले सेकंड एक्शन कोन यार गोटे कॉन्सिक्वेंस कोथि पे से बेड को गला टायर्ड हवा जगु ताले जेतु यार गोटे कॉन्सिक्वेंस हमें सेठी आज लगैले as the boy was tired he went to bed तापरे जदि को हमें पिला माने कंपाउंड करबा कोन करबा सो लगाई देबा द बॉय वाज टायर्ड So he went to bed. सो ही वेंट टू बेड ही को रिमूव कर दबा ना ही रहइबो ही रहइबो ना रिमूव करबा की कहि परिबो Sir रहिबो. ना रिमूव कर दबा Sir रहिबो. Sir रहिबो. ही रिमूव हे गेले एडाउ किस मीनिंग आसीबनी ताले ही एठी रहि सो ही वेंट टू बेड तीनटा जगह क्लियर sir. सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेक्स्ट Farmer finished his work. द फार्मर फिनिश्ड हिज वर्क He returned home. 1 minute. The farmer finished his work. Then He returned home. he returned home. देखिए वहां पे RETURNED. Yes. फार्मर फास्ट कौन कला ता काम को सारला काम सारला परे होम को आसिला दुईटी एक्शन भितर टाइम गैप अछि ना नाही No, sir. नहीं काम सारला सांग सांग पळाइसला घर को काम सारला पूरा काम जेमति सारला दौड़ला घर को ना काम सारला परे सेठी फ्रेश सब घर बिलरे बा जोठी जोठी जाइथिबो तार सब कोन टूल्स को से गोटे जगह रे गैदर करिवो तापरे बैग को धरिवो तापरे जीवो आ काम जेमति सारला से सेमति आसीबो रे गोटे ताले एठी कोन अछि टाइम गैप अछि ना नहीं ताले जदी टाइम गैप अछि हम कोन करबा रूल कोन कहउछि हमरा रूल कोन कहउछि Perfect participle. परफेक्ट पार्टिसिपल ताले कोन करबा वर्ब की से Having. वर्ब की से फार्मर So finished. यस ताले कोन करबा हैविंग प्लस B3 करबा ना कोन Yes, sir. ताले कोन हबो Having finished. having finished his work तापरे okay students read one of the questions from the sample paper read the question Sir, in example, there is a man in the searching crowd. yes what is the example for in which form Sir, past. past what is the verb Sir, hard. hard yes then read the side whole classes start reading the questions How did you get here? how did you then Get here. get here Comma. comma Child. child Question mark. yes Whose baby?
whose baby dash. dash Sir, in the bracket B, be U, you. Yes. question mark. Question mark. Good. Then The man the man dash. dash In the bracket ask, asked as he as he dash. dash In the bracket steer, steer clear of the mass. clear Of the mass. of the mass. Of the mass. Yes. Full stop. Yes, sir. Then Sir, then next line start. yes. The child The child dash. dash In the bracket weep. be Sir, weep. will with the Yes. child Weep. with Sir, sir, after dash. the child dash. Yes, sir. Then Sir, in bracket there is weep. W-I WEEP. weep. Yes. More bitterly More bitterly, than ever now. more bitterly than Ever now. ever now. Ever now. Yes, this much. No, sir. Full stop. No, sir. Yes, then. Sir, and only cried, And only cried, comma. comma, So then one apostrophe starts. apostrophe starts. I I dash dash in bracket want want. my mother, I want my mother, comma. comma. I want my father. I want my father. Then Okay, this much. yes, sir. Afterwards, we will do the another section. Now let us read thoroughly this sentence. How did you get here, child? Whose baby dash you? This is a question. This question is asked to the baby. And this is the be for. It can be am, is, are, was, where. Isn't it? Be can be was, where. Be has many forms. Be has many forms. Yes, sir. So which form should we use here? It should be was or is or are or what should be? Are. Whose baby are you or was you or what you? Are you? Are you? Then the man asked. कौन करेगा ask को हमें? Asked. The man asked as he steered. Steer को कौन करेगा? Steered. Steered होची गोटे verb. Steered माने से कौन कला navigate कला से भितरे भिड़ा भितरे navigate करी करी गला. Steered clear of the mass. The child कौन हो बेटा? Child कौन? Weeped. Wept. कहीं क्या wept? से एडी कौन? Simple past कहीं लगेगा? ना एडी action perform ही गला. से पूरा कांदिला जोरे. The child wept more bitterly than ever now and only cried. कौन से कहला कांदिगिरी? I want को हमें कौन करिबा? Wanted करिबा ना want करिबा ना कौन करिबा? First form हमर कौन अछि? B3 अछि? अच्छा ताले से I dash my mother, I want my father. ये सेंटेंस कोथरे चलला? प्रेजेंट एटा को मध्ये हमें want लगेबा. से कहूची कोन तार स्टेटमेंट ता कार स्टेटमेंट एटा बेबी रो स्टेटमेंट. बेबी कहूची I want my mother, I want my father. Clear? Yes, sir. Then the next one. एटा बुझी पालो समझते क्लियरली? Yes, sir. चलो नेक्स्ट को चलो. Sir, there is another line. Yes. Wait 1 minute. Read that line. So the man dash The man dash in bracket try tried dash. Yes, sir. Him him by by dash dash in bracket take him up to him up to the roundabout. the Roundabout. round about. Yes, this much. Yes, sir. This much. Yes, sir. Okay. The man ଲୋକଟି କଣ କଲା? ଚେଷ୍ଟା କଲା ନା?
The man tried. To soothe. Very good. ଲୋକର purpose କ'ଣ ଥିଲା? To soothe him. To soothe. The man tried to ଏଠି ଇଡି ଲଗା ହବ to soothe him by Taking him. କେମିତି କଲା? Taking him up to the roundabout. ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? Yes. The man ଏଠି ଏଟା main verb କ'ଣ ରହିଲା? Tried. କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲା? କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? Purpose ଥିଲା to soothe him by taking him up to the roundabout. Clear ହେଇଗଲା? Yes, sir. Okay. ତାହେଲେ 10 sequence clear ସମସ୍ତଙ୍କର? Yes, sir. Okay. Up to this much clear. If I will ask another question, you cannot say, I think. Good. Today we learned about the simple sentence, complex sentence and compound sentences. Any doubt? No, You sir. have? No doubt. But there are many things remaining in this 10 sequence and synthesis. Just one we discussed. We discussed about only one today. Many things are there. How to combine these two sentences? There are many rules and regulations. Infinitives are there, gerunds are there, noun in apposition is also there. We will discuss one by one in our later classes. And students, we hope this English class definitely it will help you to solve your 10 sequence based questions. And in our next class, we will come with more rules about this synthesis and 10 sequence. Thank you very much. And students, again, I am telling you before leaving this class, if you have any doubt regarding this English grammar chapter, you don't forget to comment. Please comment to my comment box and definitely I will try to clarify your doubts. Thank you and all the best.